चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेंगे। ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू a0 plus a1 plus a2 x square plus this an x to the power n where a not equal to 0 is called a polynomial। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी इक्वेशन जो कि a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 के फॉर्म में रहेगा। These are called polynomial। फॉर एग्जाम्पल के ऐसे समझेंगे हम लोग। इंटीजर पता है सबको, 4 5 6 1 2, और वेरिएबल भी पता है। वेरिएबल का एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी कुछ भी। इन दोनों का प्रोडक्ट भी पता है। प्रोडक्ट पता है 3, प्रोडक्ट पता है 3 इंटू ए। 3 ए होता है, 3 इंटू माइनस ए माइनस 3 ए। ठीक, अब मैं जो बताऊंगा उसको आप लोगों को ध्यान से देखो। तो जब हम पॉलिनोमियल को और इंटीजर को एक साथ लिखेंगे 3x प्लस 3x स्क्वायर, सपोज की 3x3 डॉट डॉट डॉट, जहाँ पे ये अलजेब्रा एंड वेरिएबल, अलजेब्रा एंड वेरिएबल, अलजेब्रा एंड वेरिएबल साथ में हो, इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारा एक वेरिएबल हो, ठीक है, एक वेरिएबल
कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा इसके स्टार्टिंग करने से पहले। पॉलिनोमियल आर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म plus px equal to a1